Okay, so features of perfect competition we were discussing. In that, the first feature we have studied was large number of sellers. I said the number of sellers are so large in market that an individual supply is a small fraction of the total market supply. Individual supply is a small fraction of total market supply. Similarly, we studied large number of buyers, large number of buyers. The number of buyers are so large that a small individual buyer's demand is just a small proportion of total market demand. Then we studied homogeneous product. The products are homogeneous, that is, they are identical in nature. Products are homogeneous, that is, they are identical in nature, same in size, shape, color, packing, flavor, etc. etc. Jैसे a packet of Tetra Pak milk, some fruits which are same in size, shape, color, flavor, etc. You cannot get an apple with strawberry flavor. Homogeneous. Now, this is one very important point what we are describing, free entry and exit. In a perfect competitive market, there are no restrictions on entry and exit. That is, there is complete freedom. मतलब जब भी as a person अगर आपको कोई business start करना है तो आपको business में profit दिखा, you start the business, loss दिखा, you exit from the business. जैसे suppose एक ज्वेलरी business है और ये एक person है जिसके पास capital है, उसको profit दिखा इस business में, तो उसने जाके business start कर दिया. He started with that business. अभी वैसे ही अगर वही बिजनेसमैन को इस बिजनेस में लॉस दिखा, there are possibility that he will leave the business and go away. He will leave the business and go. So there are no restrictions. जब प्रॉफिट दिख रहा है, you can enter into this type of market. जब लॉस दिख रहा है तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो. Next feature of this market is perfect knowledge. In this market, the buyers and sellers have perfect knowledge regarding market. पूरे market का perfect knowledge रहेगा, जैसे market price, product का price क्या है, gold का, silver का, पूरा knowledge रहेगा. Sellers should not charge less and buyers should not pay more. Seller should not charge less and buyer should not pay more. That is one very important aspect of the market. That means, in simple terms, in this type of market, there must not be any loss either to the buyer or to the seller. दोनों में से किसी को भी loss नहीं होना चाहिए. Perfect mobility of factors. Do you know what are the factors of production? Factors of production कौन-कौन से होते हैं, पता है किसी को? There are 4 factors of production. 4 factors: land, labor, capital, enterprise, or you call them as entrepreneur. Land, labor, capital, entrepreneur are the 4 factors of production.
Now, these factors of production have perfect mobility. They are perfectly mobile. What does that mean? What does that mean? It means that these factors are mobile or free to move from one industry to another industry, one occupation to another occupation. They can freely move from one industry to another industry or from one occupation to another occupation. They can freely move. Then that is perfect mobility of factors. Next feature of this market, no transport cost. Do you know what do we mean by transport cost? What do you mean by transport cost? Toll naka is transport cost. Hey pagal, Krupil Vekaria. Transportation charges, as said, they're very correct. Transportation charges, the charges which are incurred to transfer the goods from one place to another are called transport charges. तो वो जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, there is absence in this market. Transport costs are ignored. Transport costs are not considered, they are ignored, as the products which are dealt over here are homogeneous. इसके लिए ऐसे बिलीफ पे जाते हैं कि यहाँ पे मार्केट प्राइस भी यूनिफॉर्म रहेगा, एंड मार्केट प्राइस यूनिफॉर्म होने की वजह से यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ऐड किया जाएगा, अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे तो उनके प्राइसेस भी चेंज हो जाएंगे. इसके लिए इस मार्केट में वी इग्नोर द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. We ignore the transport cost. Next, uniform price. Uniform price, single price prevails. जैसे take example, potatoes, almost सब जगह पे same price पे आपको मिलेंगे. Flowers, almost सब जगह पे आपको same price पे मिलेंगे. So certainly there is uniformity of price because the products are homogeneous, and in this market the prices are determined by the interaction of demand and supply. Kaise we will discuss. No government interference. In this market, it is believed that there will be no interference of the government. No interference of the government. There would be laissez-faire policy. That means government is concerned only about taxes. बाकी क्या हो रहा है मार्केट में हमको कुछ लेना देना नहीं है. Government is least bothered about the happenings into the market. Government will not interfere. It will interfere only when you do not pay the tax. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें.
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Rationality. In this market, both buyers and sellers are to be rational, Buyers will always aim to have maximum satisfaction, and sellers will always aim to have maximum profits. दोनों rational रहेंगे. So these are the features of perfect competition. Now we go ahead towards the concept called as price determination under perfect competition. But before that, कुछ products के example लेते हैं perfect competition के. जैसे we take example of vegetable markets, we take example of bullion market, or you call it as jewelry shops, milk, fruits are all examples of perfect competition. Did you know that the above all 10 features may not be applicable for any single product? हमने ऊपर जो भी फीचर्स स्टडी किए हैं वो सारे फीचर्स किसी एक प्रोडक्ट में या एक मार्केट में प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है. एंड देयरफॉर आई कैन से perfect competition cannot exist in reality. In reality, it will not exist. In reality, there would be existence only of pure competition and not perfect competition. Price determination under perfect competition. Price determination under perfect competition. How the prices are determined. See, we all know price and demand. How are they related? Can anybody of you help me? How are price and demand related with each other? Price and demand are inversely related. Very good. मतलब प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगा. प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा. ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? कोई डाउट है किसी को? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. वैसे ही प्राइस एंड सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा. प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगा. So there exists direct relationship between price and supply. अभी हम एक शेड्यूल बनाते हैं जहां पे डिमांड एंड प्राइस दोनों रहेगा. डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई तीनों. तो प्राइस ले लिया 10, 15, 20, 25. डिमांड 200. अभी देखो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होने वाला है. 150, 100, 50. तो सी दिस एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डिमांड. प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया. प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया. अभी प्राइस एंड सप्लाई. प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा. तो सप्लाई बढ़ेगा 50, 75, 100, 150 एंड सो ऑन. अभी आप यहां पे ऑब्जर्व करो, प्राइस बढ़ गया,
डिमांड कम हो गया, सप्लाई बढ़ गया। अभी एट प्राइस, व्हेन प्राइस वाज 20, when price was 20, you observe demand was equal to supply. When price was equal to supply, sorry, demand was equal to supply, we observe that point in economics, we call it as equilibrium. We will call it as equilibrium, where demand is equal to supply. और उधर जो प्राइस एग्जिस्टिंग रहेगा, अपने एग्जांपल में 20 रुपीज, तो उधर जो प्राइस एग्जिस्टिंग रहेगा उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, और उधर जो क्वांटिटी एग्जिस्टिंग रहेगा उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, तो लेट अस प्लॉट इट ऑन द ग्राफ। वो टेबल पहले लिख लो अपने पास। हो गया टेबल लिख के आपका? वो फीचर्स बाद में जाएंगे वापस, अभी नहीं जा सकता हूं मैं। लास्ट में आई विल शो दैट फिफ्थ फीचर, रिमाइंड मी इन लास्ट। ओके, अभी उसी को हम डायग्राम फॉर्म में लेके जाते हैं। आई हैव ड्रॉन बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज प्राइस एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस वी मेजर क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। पहले हमने डिमांड को बना दिया डी डी, और फिर हमने सप्लाई को बना दिया एस एस। अभी आप यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो हमने उसको नाम दे दिया पॉइंट ई। पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन demand is equal to supply. At the point of intersection, demand is equal to supply, and that point would be equilibrium point. उस point पे corresponding price जो है 20 will be equilibrium price, and corresponding quantity जो है will be equilibrium quantity. इक्विलिब्रियम के पहले अगर आप देखो, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। एंड इक्विलिब्रियम के बाद में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ऑब्जर्व करो, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, then that situation in economics shall be called as scarcity. डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, that is scarcity. डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, that is surplus. And जहां पे डिमांड is equal to supply, that is equilibrium. 20 is equilibrium price and 100 is equilibrium quantity. ये डायग्राम आपके बुक में ड्रॉ करके ले लो।